Hello students, welcome my channel. Myself Dr. D.K. Sinha with new topic and today's topic is थैलोफाइटा। पिछले वीडियो में प्लांट के क्लासिफिकेशन में बताया गया था किंगडम प्लांटी को कई पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आज हम जानेंगे थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा, थैलो मीन्स थैलस, फाइटा मीन्स प्लांट, मीन्स प्लांट whose body is thallus like, that is called thallophyta. And thallus like body means body is not differentiated into different parts such as root, stems, leaves, that are called thallophyta. Thallus like body means body is not differentiated into root, stem and leaves. And the term thallophyta was given by Indlicher. The term thallophyta was given by Indlicher, and the body of thallophyta is thallus-like, not differentiated into root, stem and leaves. Okay. According to two system classification, algae, fungi and prokaryotes were kept in thallophyta because the body of algae, fungi and prokaryotes all are thallus-like. But after that, according to phylogenetic classification, algae were kept in different group, and that group is thallophyta. Okay, so in thallophyta we study mainly about algae. थैलोफाइटा में हम लोग मेनली एल्गी के बारे में ही जानेंगे। एल्गी, द टर्म एल्गी वाज गिवन बाय लिनियस, टर्म गिवन बाय लिनियस, एंड अ स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। अ स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। द फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिच, एंड इंडियन father of phycology Einiger. Okay, so in phycology we study about algae, and the body of algae is also thallus like. Okay, now see the characteristic features of algae. Algae are cryptogamous, non-vascular and photosynthetic. Cryptogamous means livings in which sexual organs are not visible, that are called cryptogamous. And algae are cryptogamous, non-vascular, no any vascular tissue is present, so non-vascular and autotrophs. Present in an aquatic habitat or on lands, both. In case of aquatic, it may be freshwater or marine, and in terrestrial form it also may be present in different forms such as epizoic, endozoic or parasitic. Ep means out, zoic means animal, means outside the animal, on the animal body, that is epizoic. Endo, inside, zoic, animal, inside the animal body, that is called endozoic. Example of epizoic, cladophora. And cladophora present on mollusk cell. मोलस्का एनिमल का एक ग्रुप है. बॉडी ऑफ मोलस्का इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, एंड ऑन द सेल ऑफ मोलस्का cladophora algae is present. So it is present outside the animal body and called epizoic form. Other is endozoic, means inside the animal body. Example, Zoochlorella, present inside the hydra body, and Zoochlorella is also called a space algae. Zoochlorella is also called a space algae. And next, parasitic form as parasite. Example, Cephalurus, present on leaf of tea plant. Cephalurus present on leaf of tea plant and cows
a disease in tea plant that is called red rust disease. Disease is called red rust disease. So Cephalosporus cause red rust disease in tea plants. Okay. Next, body is thallus-like, not differentiated into root, stem and leaves, and thallus-like body may be in filamentous form or in colonial. Okay. सेल, अगर हम सेल की नंबर की बात करें, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, generally mostly are multicellular, but some are unicellular also, such as Chlamydomonas. Chlamydomonas is unicellular algae, and the cell of algae is covered by mucilaginous sheath and cell wall. Outermost covering is mucilaginous sheath, and that mucilaginous sheath protects the algae from desiccation, and below inside the mucilaginous sheath cell wall is present, and cell wall consists of cellulose. Cellulose is the main component of the cell wall, but some other substance such as galactans, pectins, mannans are also present in cell wall. Okay. Body is thallus-like, filamentous, colonial. Body is covered by mucilaginous sheath that protects from desiccation. Desiccation means dryness. Below the sheath, cell wall is present that consists of mainly cellulose and some other substances such as pectins, galactans, mannans also present in cell wall. Algae are autotrophs, means photosynthetic, makes food with the help of solar energy, and photosynthetic है, इसका मतलब है कि photosynthetic pigment भी होगा. In algae, different types of photosynthetic pigment such as chlorophyll A, B, C, D, etc. A, B, C, D, different types of chlorophyll, xanthophyll, phycoerythrin, etc. Different types of photosynthetic pigments are present in algae, and these pigments are present in plastid. इसके पहले हम लोग जो भी किंगडम पढ़े थे, जो भी लिविंग्स पढ़े थे, उसमें प्लास्टिड नहीं आया था. मीन्स एल्गी पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें कि प्लास्टिड प्रेजेंट होता है. बट प्लास्टिड कैसा होता है? ए ग्रैनल प्लास्टिड. द प्लास्टिड ऑफ एल्गी इज ए ग्रैनल, मीन्स विदाउट ग्रैना. A granule without grana. Grana is not present in algae. And plastid consists of 4 to 20 thylakoids. 4 to 20 thylakoids. Thylakoids not present in group. Okay. Sex organ of algae is mainly unicellular. Livings are multicellular, but sex organ is unicellular and non-jacketed. उसके ऊपर कोई कवर नहीं होगा. एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन कारा, green algae, in which multicellular and jacketed sex organ are present. सेक्स ऑर्गन का नाम हम एंथ्रेडिया, आर्चिगोनिया दे सकते हैं, कहते हैं ओगोनिया, लेकिन वह जनरली एल्गी के कंडीशन में यूनिसेलुलर होता है. इन केस ऑफ कारा इट इज मल्टी सेलुलर. ओके. एंड अ स्टोर्ड फूड इज
a starch. As like plant, a store food is a starch in algae also. Okay? आगे हम लोग देखें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी. एल्गी रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली ऑल्सो. तीनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग. अगर किसी एल्गी का बॉडी फिलामेंट लाइक है, एज फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्क एल्गी or pond silk. Body of Spirogyra is multicellular and filament like this, like consist of many cells. Due to external pressure such as water currents by action of animals, filamentous body of Spirogyra divides into more than one piece and each piece forms new Spirogyra. So this method is fragmentation or vegetative reproduction. Next is asexual. Asexual occurs by formation of different types of spores. And spore कौन कौन होगा? Maybe zoospore, a planospore, hypnospore, akinete, etc. These are the different types of spore develops in algae. Zoospore, motile spore. A planospore, non-motile and thin-walled spore. Non-motile and a planospore, non-motile and thin-walled spore. Next is hypnospore, non-motile, thick-walled spore, and akinete is also thick-walled, non-motile, and mainly helps in non-motile and helps in perennation. In this spore, zoospore develops in favorable condition and these three develops in unfavorable condition. Zoospore in favorable condition, hypnospore, akinete, a planospore in unfavorable condition. Okay. Next, third method. Third method is sexual reproduction, and sexual reproduction occurs by fusion of gametes. By fusion of gametes, and fusion may be isogamy, anisogamy, and oogamy. Isogamy, anisogamy, and oogamy. Isogamy means fusion of similar gamete. अब सिमिलरिटी किसके आधार पर?
स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होगा वैसे गैमीट का फ्यूजन कहलाएगा आइसोगैमी। सपोज दैट these are two gametes fused together, that is called isogamy. An isogamy, an iso means dissimilar, an iso means dissimilar. dissimilar का मतलब क्या हो गया? one is a small, other large, this like. Dissimilar. In oogamy, one is motile and other is non-motile. This like. ये फिगर एनसीईआरटी में भी शायद दिया है। ऐसा फिगर इससे देखने से तो लगता है कि यह ह्यूमन के कंडीशन ओवम और स्पर्म का फिगर है, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में यूगैमस नहीं होता है। इन ह्यूमन एनाइसोगैमस टेक्स प्लेस। इन ओगैमी कंडीशन वन इज मोटाइल, अदर इज नॉन मोटाइल। अब बात आती है कि ह्यूमन में इसको क्यों नहीं कहेंगे, तो याद रखेंगे कि ह्यूमन के कंडीशन में जनरली ओवम नॉन मोटाइल है, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी में, और फ्यूजन ओवरी में नहीं हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है इस्थमस में, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन इन फैलोपियन ट्यूब। इट मीन्स ओवरी से ओवम भी इस्थमस तक आता है, उसका अपना मूवमेंट नहीं है, बाहर के फोर्स के कारण मूव करता है। तो कहते हैं कि ह्यूमन में एनाइसोगैमस होता है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ओके, the body of algae is haploid, also called haploid gametophyte, and haploid body produce haploid gamete by mitosis cell division. After fusion of gamete, after isogamy, anisogamy or oogamy, diploid zygote is formed. That diploid zygote divides by meiosis cell division and forms haploid spore. That haploid spore germinates and forms haploid gametophyte body. Okay, so the life cycle of algae is mainly haplontic life cycle, but in some cases may be diplontic or haplodiplontic. For competition view, कंपटीशन के व्यू से तो जो टर्म है एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ गैमी, किस एल्गी में कौन सा गैमी है? आइसोगैमस, स्पायरोगायरा, इक्टोकार्पस, यूरोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, एनाइसोगैमस, क्लेमाइडोमोनास बोरोनी, एंड ओगैमस प्रेजेंट इन वॉल्वक्स, फ्यूकस एंड कारा। इसको कंपटीटिव व्यू से बिल्कुल याद रखना है। इसी तरह से इन एल्गी plastid is present and in plastid photosynthetic pigment is present, and the plastid of algae is of different shape. So there are the shape of the chloroplast: Cara discoid shape, Eurothric girdle shaped, Spirogyra ribbon or spiral shaped, Zygnema a star shaped, Odogonium reticulate shaped. These are different shape of chloroplast or plastid. Okay, thanks.